By early, I mean like the first, like 3 years, 4 years, it's very hard to measure if anything's ever compounding because baseline effect is so very dominant. How do you measure whether something's working? Are these intense spikes of success? Well, something becomes big and you're like, cool, I have something, I've held on to something, or do you keep doing something over and over again by believing in the process? I can answer as a brand, not as a content creator, this question, to be honest. As a brand, when you're making content and you're trying to do something that's compounding, I feel social listening is very important. Okay. Because it's brand work, so it's not going to give you a tangible metric if you do any kind of brand campaign or content. तो उसमें सिर्फ social listening से आता है. So, for example, if I was working with a company and I was doing a lot of integrations in films, and I locked 60 films, these 60 films are going to get launched over probably the next 5 years because they're being shot right now. उसका कंपाउंडिंग मुझे 5 साल बाद आएगा, पर कैसा आएगा? एक फिल्म देखा तो सोशल लिसनिंग हुई, सेकंड फिल्म देखा तो सोशल लिसनिंग हुई, थर्ड फिल्म में अब लोग क्या बोल रहे हैं. सो I feel as a brand, what people are saying and not the metrics work small. Said that, content has become very key to entrepreneurship. I think ऐसा कुछ written in stone नहीं है कि जरूरी है करना, ठीक है? Because like content for products that aren't really that great doesn't help. Right? So? At this, yeah, of course. तुम्हारे पास basic PMF नहीं है, तुम जितना भी चिल्ला लो. नहीं, वैसा नहीं. मैं बोल रहा हूँ in general, अगर because marketing is becoming harder, content is becoming more important. That's the thesis. So it's a paradox, right? Which is that content for products that don't work is pointless. Okay, great products with no customers is also pointless. Okay. Yeah. So the holy grail is to do both. The holy grail is that. Correct. Okay. We are seeing this play out with the MKBHD thing, right? Which is creator entering the builder space. Okay, and we have now seen over and over again the examples you mentioned, which is builders who have built stuff also entering the content space. Correct. Right? You have to there is no definitive. वही चीज है जो होली ग्रेल बोला कि तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि भाई तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी है और तुम्हारे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है. तो वही चीज है कि या तो तुम एंटरप्रेन्योर और तुम्हारे पास अच्छा प्रोडक्ट है तो तुम या तो कंटेंट में कूदो सो दैट तुम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना सको. और अगर तुम्हारे पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर अच्छा है तो उस पर तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाओ. जैसे बियर वैसे करना, जैसे तन्मय लोग का अपना है मून शॉट एजेंसी. तो वही चीज है कि ये करना जरूरी ही है. इट हेल्प्स if you are a builder who can also do content. मतलब content is a catalyst. I was just about to say that. It will accelerate a good product, but of course it has to come at the end of great PMF. Problem solved. It's not going to take away from you, but it's a means to an end. वही फेबियन वाला बात है भाई, पहले अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करो. अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो ऑफ कोर्स तुम अच्छा अगर कंटेंट ही बनाएगा तो वो हेल्प करेगा तुमको. बट अगर प्रोडक्ट ही खराब है तो तुम जितना भी अच्छा कंटेंट बना लो क्या फायदा. हाँ, मेरे को लगता है कि content is now going to become meat and potatoes of any marketing company. There are a lot of very successful brands that do not do any sort of content, and they are successful in their own way. Will they be 10 years down the line? I think so, because their product is hero, and there are a lot of brands whose Instagram and social media is just filled with faltu trending content, but till date I don't know what the product is. इसमें ना there's a P&L lens to this कि early days में जब तुम मास मीडिया नहीं कर सकते हो, वी से अभी भी टीवी रीचेस ऑल ऑफ अस ऑन IPL, राइट? आप देखने जाते हो, ठीक है, आप हॉटस्टार पे देख लेते होगे, बट वहाँ की एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो देयर इज अ सर्टेन P&L साइज आफ्टर व्हिच यू कैन ब्रूट फोर्स योर वे इनटू माय मेमोरी. And that's where I think his unit extremism per content piece actually works out. तो बट वो P&L साइज मोटा मोटी 400-500 crores ऑफ टॉप लाइन से नीचे आप ब्रॉडकास्ट में एडवर्टाइजिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 10 से 20 करोड़ का टिकट साइज होता है उसका, राइट? तो गेम इज ये 0 to 500 करोड़ की जर्नी कैसे निकालोगे, करेक्ट, राइट? उसमें यू नीड कंटेंट एज अ कैटलिस्ट इफ यू कैन. अदरवाइज देयर आर अदर वेज, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेड मेथड कि आप 10 रुपए का चिप्स निकालो, आपके पास कोई पापा का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत पुराना, आपने उससे निकाल दिया कुछ, राइट? देयर इज सम नेटवर्क इफेक्ट बिजनेस. देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट, बट कंटेंट इज अ हैक इन द डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करनी है अर्ली डेज में, बिकॉज मास मीडिया का टिकट साइज बहुत हाई है. एक्चुअली मास मीडिया इज द चीपेस्ट मीडिया पर eyeball. TV is the cheapest, but the ticket size is so high your P&L can't afford it, and many brands have made the mistake कि 100 करोड़ की स्टेज पे फंड रेज करा और 20 करोड़ का कैंपेन चला दिया, उससे कुछ नहीं हुआ because your physical distribution was not up to the mark, and then your company imploded under the weight of that marketing budget because you spent 20 crores at that time, right? So
That's why content is needed. To answer your question of पता कैसे लगता है कि content से कुछ हो रहा है, I think उसको भी PMF lens से देखना होता है. First get product PMF and content PMF for me, just like product PMF का best proof is repeat rates. Even on content, the best proof that I've found is repeat rates. Repeat rates. Yeah, and I see it in two ways. A, average view duration, AVDs are very important. Yeah. What is the depth to which people are going? How long are they staying with your content? And B, you will find those 1,000 super fans of your content जो हर वीडियो पे आके कमेंट करते हैं और हर then you know कि कुछ तो PMF तुम hit कर रहे हो. Some niche is loving the way you're doing it, how you're doing it, etc. Hopefully that's a cue to keep doing what you're doing. I have to agree with him. Like Tanmay also says this, I also say it. I said distribution is key. I think you said distribution is king, no? PMF जिनको नहीं समझ में आया, PMF मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो वही बोल रहा है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसका भी प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए और एक सर्टेन सेगमेंट के लिए वो एकदम सही प्रोडक्ट होना चाहिए. और वैसे ही तुम्हारा कंटेंट का भी एक PMF होना चाहिए कि और वो तुम कैसे एनालाइज करेगा कि भाई एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है तुम्हारा कंटेंट का, और तुम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारे पास 1,000 ट्रू फैंस आ जाएगा कि जो तुम्हारा हर एक कंटेंट के साथ इंगेज कर रहा है, तुमको DMs भेज रहा है, तुम्हारा कंटेंट पे कमेंट कर रहा है, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो वर्क कर रहा है. I know you said this. So if there's a brand, they need to first figure out कहाँ, ठीक है? Okay. क्या तुमने सोच लिया क्या करना है, what, but कहाँ becomes very very important. So you have to figure your distribution. Like he said, big tickets, IPL, TV, it's extremely expensive. What does a startup do? How can they afford marketing? Yeah. Your distribution will tell you how do you reach your target audience. Now this is also another game. Every distribution channel has a different format of content and different type of content. What will work on a billboard will not work on print. What will work on print will not work on social media. What will work on social media is not long format enough for YouTube. Good point, actually. So then your what, when, why becomes a huge question and a gamble, and you have to sort for all three simultaneously because all of them are different. You know, the content, I think the platform variances become, you know what? पॉइंट एकदम वैलिड है कि भाई जो कंटेंट तुम्हारा बिलबोर्ड पे चलेगा वही सेम कंटेंट तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म पे नहीं चलेगा. जो शॉर्ट फॉर्म पे चलेगा वो लॉन्ग फॉर्म पे नहीं चलेगा, जो लॉन्ग फॉर्म पे चलेगा वो बिलबोर्ड पे नहीं चलेगा. तो वही तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा. पहले बात तो भाई तुम्हारा ऑडियंस है कहाँ. तुम्हारा ऑडियंस बिलबोर्ड देखता है तो तुम बिलबोर्ड पे तो उसमें भी एक कैटेगराइजेशन कि बिलबोर्ड कौन देखता है, वही उसमें वही कौन देखता है. ऊपर से तुम्हारा ऑडियंस देखता भी है कि नहीं, कि शॉर्ट फॉर्म पे तुम्हारा ऑडियंस है कि नहीं, और शॉर्ट फॉर्म भी कहाँ कंज्यूम कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है कि इंस्टाग्राम पे कर रहा है, तो उससे भी डिफरेंस आ जाएगा. लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जैसे फेसबुक पे भी वर्क करता है, फेसबुक पे भी तुम अपलोड कर सकता हो और यूट्यूब पे भी. तो अब तुम उसमें भी तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाना है. तो वही है, गैम्बल तो है, मतलब गैम्बल है, तुमको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑडियंस कहाँ है और वो कैसा टाइप, वो कैसे कंज्यूम कर रहा है कंटेंट, फिर इसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा. Our biggest affiliate marketing channel today. It's Zomato. I could never have imagined. At the end screen पे Partnerships. Cred obviously is like an obvious affiliate non-core for D2C, but Zomato is becoming huge. Because of your partnership. Yeah. How on Zomato, like After the orders place, they can see a. Sometimes like GP does the scratch card bit. I think of shaving when I order butter chicken. It's natural. No, but It's quite interesting. younger you know? consumer trimmer. Yeah. Also, that's an insight, and that's why GP does the scratch. That whenever you spend money, you want something in return. Yeah. That's a human insight. That's where all these That's so true. धनिया धनिया मिर्ची mentality. Content with धनिया मिर्ची. तो तुमने अभी पैसे दिया तो कुछ तो दो. Sukapuri, no? Sukapuri, correct. If you were cheated, like without it. Yeah, Because that's a very important point. Because if platform variance is so high, then content flexibility also becomes super important. Exactly. It's so important. Sorry, go ahead. Should the content be for a business specialty be person led, or is there like Very good question. like for example in your company I think it's slightly person led. Person led as in You are like sort of the face of whole Oh. truth. Or in some other brands it's not as, still the content is good but it's not as like, you know, there's no one person behind it that you see on the store. What's your take on like, you know, I think it differs. I don't think you can have the same strategy. For example, Airtel Girl was the face for the longest time. Nobody knew the senior leadership of Airtel.
But startups slowly are getting their founders to be the face of the brand, because they're doing two things. They're building themselves as a brand, and whilst they're building their brand too. So they think that strategy is working. See, sometimes brands like Zomato, okay, will get someone like a Sahiba, okay, to make a ton of content. The problem arises when Sahiba leaves and starts getting way more money elsewhere. Then the brand gets into trouble. I love how you written my name in Hindi. Yeah, I write in Devanagari a lot. Oh my god. So that's where the problem arises. I think it's sorry, you were saying something. This problem is so very long. This is also like back in the day when BuzzFeed used to do With those five people. Yeah, BuzzFeed used to do many properties like Try Guys, etc., Wine about it. Yeah. They used to have many properties which were employee-led. Like BuzzFeed employees would start making the content. They all started leaving, finding management in LA. They all started leaving. Yeah. Even many of our fashion creators today who are big, they were earlier in various companies. iDiva, right? Most of the influencers iDiva, are part of Puppets, iDiva. whatever. Yeah. So the problem is this: you have if it is individual-led, the individual better have enough skin in the game for it to be worth it. Otherwise, if you're doing medium rent on this thing, then they will eventually, because content means you're going to get, if content works, you will get more popular. There will be more. Even the Travago dude left and he joined competition. Was he not the founder? No, he was not. He was that was a rumor. He left and he joined competition. I think this goes beyond just. ये बात एकदम सही है कि भाई अगर तुम या तो फाउंडर हो, तुम कंटेंट बना रहा अपना कंपनी के लिए, तो जो साहिबा बोली वही होगा कि भाई तुम्हारा अपना पर्सनल ब्रांड भी बनेगा प्लस तुम्हारा ब्रांड भी बनेगा। और दूसरा वही चीज़ है कि तुम किसी को हायर कर रहा है तो ऑब्वियस बात है, जो तन्मय बोले कि अगर कंटेंट वर्क किया तो उसको पॉपुलैरिटी मिलेगा, उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, उसको ऑफर्स अच्छा मिलेगा, तो वो जा सकता है छोड़ के, अनलेस उसका इन्वॉल्वमेंट वैसा, उसका स्किन इन द गेम ज़्यादा हो, भाई वो उस लेवल पे इंगेज हो उस कंपनी से, या उस लेवल का रिलेशन हो कंपनी से, फिर छोड़ के ना जाए, चाहे उसको जितना ही पैसा मिले, चाहे जितना क्या बोलते पॉपुलैरिटी मिले, पर एंड ऑफ द डे का कोई थर्ड पर्सन है तो वो छोड़ के जाएगा क्योंकि उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पैसा मिलेगा ही कहीं और उसको अपना ट्रू पोटेंशियल पता चल जाता है ना, पता चल जाएगा कि भाई हम एक कंपनी में स्टैग्नेंट हैं, उसके एज हम जॉब ही कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन, सर्टेन सैलरी ही मिलता है, सर्टेन सैलरी मिल रहा है, उसको उस फील्ड में काम करते करते पता चलता है भाई कि ब्रांड लोग कितना पे कर रहे हैं, फिर अदर ब्रांड मेरे को इससे ज्यादा पे करेंगे। और ऊपर से ये भी है ना कि अभी तुम सिंगल ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तुम अगर फ्रीलांसिंग करेगा, तुम अगर अपने से काम करेगा अलग अलग ब्रांड से, तो तुम मल्टीपल ब्रांड के साथ काम कर सकता है, और तुम सिर्फ एक ब्रांड से नहीं जुड़ के हजारों ब्रांड से जुड़ सकता है, और तुमको पैसा इसी लेवल का मिलेगा। तो वही चीज़ है। पर इसमें ना ये चीज़ भी है ना कि एक पॉइंट ये भी है कि जो गैरी भी बोलता है, वो भी पॉइंट चीज़ बहुत दिमाग में रखने का है कि भाई आज का टाइम में तुम अगर बिजनेस बिल्ड कर रहा है या अपना जो भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, तो तुमको तो मोटिवेट करना चाहिए अपना हर एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को कि तुम भी कंटेंट बनाओ, ताकि तुम उसको एम्पावर करो। तो गैरी वी का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, वो बोलते हैं भाई तुम तो एम्पावर करो, तुम तो पुश करो अपना ऑडियंस, अपना क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज को कि भाई तुम अपना बिजनेस बनाओ, तुम अपना कंटेंट बनाओ, सो दैट कि कल को वो छोड़ के भी जाए ना तो वो तुम्हारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बन जाए, मतलब कि उसका बिजनेस तुम्हारा बिजनेस साथ काम कर रहा है, तो तुम एक दूसरे को भले एज अ एम्प्लॉय वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, बट एज अ बिजनेस वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तो तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ों बोलता है। तो वो भी बहुत अच्छा अप्रोच है कि भाई तुम इसको पॉजिटिविटी के साथ देखो कि भाई चलो वो मेरी कंपनी छोड़ रहा है, बट उसके बदले क्या हो रहा है कि वो अपना कंपनी बिल्ड कर रहा है, और उसका कंपनी और मेरा कंपनी साथ में काम कर रहा है, और फिर हम लोग दोनों ग्रो कर रहे हैं। जैसे लाइक एक तरह से हो गया कोई, जैसे वीडियो एडिटिंग का कोई एक एजेंसी है, ठीक है, और एक मार्केटिंग का एजेंसी, उसका एम्प्लॉय मान लो खोल लिया, ठीक है, तो वीडियो इसका एजेंसी का मार्केटिंग ये कर दिया, तो दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे का हेल्प आउट कर दिया। वही चीज Individuals in front of the camera, it goes more for it also applies for people who are in the marketing team, right? Like it's a vision and it's a certain chemistry and a DNA of like marketing DNA hona chahiye company ke andar, right? Like I think Zomato is a great example. Like Akshar set it up, he was there for so many years, he made it और इतना तगड़ा ब्रांड बनाया कि अब एवरेज क्रिएटर भी बढ़िया लगता है, and also ब्रांड इतना बढ़िया है। वो अभी क्या कर रहा है यार? He's raising his kids. Yeah, he's happy. He's happy. He was working in a. When you said raising, I thought raising money and then like raising kids. I mean, if he has chosen to not tell people what he's doing, then maybe we should just leave it at that. Okay. Amazing. So, yeah, I think marketing DNA becomes
very important, which in Shashank's case, it's like it's bleeding from the top, right? Like it comes from him. So that becomes very critical. And in big brands, you can't do that because senior leadership and the board of directors, who's going to be the face? I have a... For a long time also, I think, sorry. I was just putting another frame to your question. For me, it goes back to a lot of founders again ask me कि हमें भी अपनी ad करनी चाहिए, क्या आप करते हो, etc. I think it's what and how. First, figure out तुम बोलना क्या चाहते हो, and then find the best how. In my case, because it was trust building, who can do trust building better than the founder himself coming and saying, I am putting my neck on the line, right? But you might be, if you're making a fun brand, then maybe founder is not the best guy to do it. Get Ranveer to jump off a bus and fly off an airplane or do some, Yeah, shit, but also the personality of the founder. If your personal personality, if your personality is very different from the tonality of your brand and the positioning of your brand, then you can't. And dude, you have to do it for like hopefully Many years, life, because you're the founder. You can't fake it. You can't. Like if I am not who I am in front of the camera, off the camera, inconsistency will show itself in today's day and age in like 2 months. मतलब कहीं ना कहीं भी पता लग जाएगा कैमरा. बात सही है कि भाई अगर तू जैसे अगर फाउंडर तो किसी को अगर ये प्रॉब्लम है कि भाई ये डाउट है कि इसको बनाना चाहिए कि नहीं कंटेंट, तो वही चीज़ है कि अगर तुमको लगता है कि जो तुम्हारा ब्रांड का जो आइडेंटिटी है और तुम्हारा आइडेंटिटी मैच करता है तो बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा पर्सनालिटी और वही ब्रांड का आइडेंटिटी है. बट जैसे कि ये बोला कि भाई अगर ब्रांड कुछ ज़्यादा फन है और तुम्हारा पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट वाला, तो ऑब्वियस बात है तुम वो एनर्जी नहीं पोर्ट्रे कर पाएगा अपना कंटेंट में, और तुम कब तक फेक करेगा वो चीज़, और फेक करेगा तो ऑडियंस उसको पहचान जाएगा. तो उसे हायरिंग करो और मल्टीपल क्रिएटर के साथ काम करो, यूजीसी स्टाइल कंटेंट बनाओ, तो वो भी वर्क करेगा. तो वही चीज़ है, सही बात है कि तुम्हारा जैसा पर्सनालिटी है तुम उसके अकॉर्डिंग सोचो. और पर ये भी बात बहुत सही है ना कि सपोज कोई प्रॉब्लम लेड कोई बिजनेस है, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है कि जैसे ओल्ड ट्रूथ का है कि भाई मेरे को शुगर से प्रॉब्लम है, शुगर बहुत हार्मफुल होता है, तो इसीलिए हम ये चीज़ बनाएं जिसमें हेल्दी हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं. इसमें एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड है, तो इसमें वो अपना पर्सनल स्टोरी बता सकता है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था, इसीलिए हम ये ब्रांड स्टार्ट किए. तो वो सबको कनेक्ट करेगा उससे. और ज़्यादातर स्टार्टअप का कहीं ना कहीं ऐसा ही सिमिलर टाइप का होता है कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम था, इसीलिए हम ये ब्रांड स्टार्ट किए. तो बहुत सारा सिचुएशंस में वो बेटर सोल्यूशन वही होता है कि फाउंडर ही कंटेंट बने. बट जैसा कि लोग बोला कि भाई अगर बहुत ही ज़्यादा फन है या बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ब्रांड का टोनालिटी, ब्रांड का पर्सनालिटी तुम्हारा पर्सनालिटी से, तब तुम हायरिंग करो, मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ काम करो, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा. लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है कि वो चीज़ अलाइन ही होता है भाई, क्योंकि तुम तभी ना भाई स्टार्ट कर रहे हो वो चीज़ ब्रांड. तो ये बोलता है पार्टी में बोल कॉन्वर्सेशन ऑथेंटिसिटी की तरफ जा रही है. No, but for example, faces being on brands, like from MDH, for example, it's been a part, right? Oh, iconic, yeah, that's iconic. No, I know. That's the best and the worst parallel that's drawn. Yeah, or for example, even when you look at your brand endorsement, I think what Federer did for Rolex, in a very systematic way, was just phenomenal. Like bleeding of the personal brand onto the actual. Just I very love risky giving from this both. example though. Malia, what he did for Kingfisher, is a prime example of that. He took his personal lifestyle and pushed it completely to build a brand. Yeah. It was And it imploded. And it imploded. He said, my life, the way I live my lifestyle, the luxury I do, the fun I do, that will be the brand, and he killed it. He was That's the perfectly, biggest risk of a personal brand, that you're a single point of failure. So something happens in my life which makes me infamous, and there is no chance my brand can remain dealing. But that risk is always there. Whenever you're a face of any brand, that risk will be So there. if a creator hypothetically or a celebrity like a Bollywood or cricketer were starting his or her brand, would you say that you should not start in their own name, or like the baseline effect is so high, like the starting advantage is so high. Like if Sachin was to create his own brand today, it'll be like it should be known as his brand. He shouldn't get Rohit Sharma to be the face. Because people will buy it. That would be so funny. Actually, that would be really good if you think about it. Yeah. But sorry, go ahead. I think when people have expectations, that's an opportunity to beat it. Like this one. I think Sachin getting Rohit Sharma to beat it is I actually like that idea. not bad actually. Not bad. Interesting तो है. Both Mumbai lads. कुछ तो निकल सकता है उसमें. I would entertain this idea actually. This is actually It's a good idea. Yeah. So I think that's very helpful. I think
One is brand tonality. So if you think about companies building out content, you're saying that the core of the business might still kind of at scale be kind of brute force media, etc. Do you see that changing though? Like above 500 crores, also people kind of realizing that advertising fatigue is going to start hitting IPL media, etc. because, news media. like, वो तो news में भी हो रहा है ना if I hope most marketeers at least have read Byron Sharp, this book called How Brands Grow. It's seen as the Bible. I in always the- recommend that book to everyone. It's one. Volume 1, 2 and 3. How Brands Grow by Byron Sharp. He's this Australian prof who's done the most data-led research on how brands grow. And the answer is singular, more and more reach, because brands are leaky buckets. If you're not acquiring at the speed at which you're losing consumers, then you're dead. Yeah. Right? And beyond a point, brute force media से जो massive reach at one point of time आ सकती है, at least right now वो content से नहीं आ सकती. Brute force, you mean media, Ad you mean चलाओ, TV? हाँ, मतलब ad चलाओ TV पे 10 करोड़ लोग देखेंगे, like वो आप अपने content से Reach and frequency both. I think it's and. I think large brands have realized that this is, at least today. And see, it's not just reach ना Revant, it is consistency into reach. कि मैं वही, एक frequency. creative बना के उसको multiple times to a large audience, वो crack अभी तक content से नहीं आया. But TV में is that power still there? For example, like through whatever controversy, they've gone to so many news channels. I feel like I would rather go to a podcast of a creator than a news channel. I feel like way more people watch a podcast. No, that's the echo chamber we live in. Or like maybe it's a tier one. No chance है. वो तो There's no TRPs है ना, chance. मतलब जो थोड़ी सी fixed होती हैं, but largely TRPs You will get a directionally million आते views, हैं. right? You will get triple that reach I agree with on a you, actually. multiple basis on TV. I'm talking about your hotspots. I'm talking about IPL, for example, or cricket. IPL where your and entire that's a nation slightly is different thing. But also, when we used to do ad campaigns, for example, Anupama. Anupama is Tarak Mehta. Two shows that have extreme crazy reach and views. And the ad time there is very expensive because of the viewership that you're getting. Your reach and frequency game there Or the is Shark crazy. Tanks of the world now. Or the Shark Tank. No, These are but- very iconic, I would say. English news channel numbers are Probably very low. Exceptionally Big question bad. But it's also they've been lying for the last 5 Yeah, years. yeah, Blindly. I'm I sure. also feel like, for example, a lot of them have OTTIs a lot quicker. Like news channel का फटाफट app पे inventory becomes massive. So if you're advertising there and that media bucket is there for you, the ability to do that versus content becomes a lot like just way wider. But as a premium brand, like suppose you're a relatively premium brand, would you still want to, like, would Anupama or Tarak Mehta, would you still gain a lot out of that? It's a P&L answer. Maybe the day I'm 1,000 crores and I need to correct. go to 2,000, maybe the answer Launch is on There's the no other brand way to do call. it. but I Puri would, सच्चाई. There's I no would other way you can also do say it it's a also. game of your segmentation and targeting, because in digital you can really nichely target exactly what consumer you want to reach, right? उसके पास ये phone होना चाहिए, ये lifestyle होना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए. It's completely niche. TV has a lot of spillover. You could have a lot of people who are not part of your target audience watching. So it also depends on who you're targeting and why. क्योंकि Mac होता है. मम्मी acquisition cost. ये ना डिबेटेबल टॉपिक है. अब क्या बोलते हैं, जैसे सब सारा ही पॉइंट वैलिड है. हाँ. जैसे कि ये वैलिड फैक्ट है कि भाई टीवी एड्स और ये सब ऐड वो ज़्यादा बिगर ऑडियंस तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि रीजनल लैंग्वेज में बात करता है या हिंदी में बात करता है. तो रीजनल कंटेंट, और वो भी है ना कि तुम एक ही ऐड को बना के तुम मल्टीपल बार चला सकता है. उसमें तुम जैसे कोई कंटेंट का दिक्कत थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, तुम आज कंटेंट एक नया डाला, कल को तुमको एक नया डालना पड़ेगा, परसों नया डालना पड़ेगा. तुम सेम कंटेंट को हर दिन डालेगा तो सब तुमको अनफॉलो कर देगा. बोलेगा भाई ये सेम वीडियो हर दिन डाल रहा है, पागल हो गया या कुछ भी हो गया. पर बड़ा मासी ऐड में क्या होता है, तुम एक ऐड बनाया, तुमको मालूम है बेस्ट ऐड है जो भी है, तुम उसको फाइनलाइज कर दिया, उसका तुमको बस डबिंग करना रहता है. उसको अलग अलग लैंग्वेज में डब किया और तुम अलग अलग रीजन में चला रहा. तो वही चीज़ है कि भाई वो एक बहुत ही बड़ा ऑडियंस पास पहुंचता है, जो कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. जैसे कि वो बोला ना कि क्या बोलते हैं, आई वुड प्रेफर कि हम कोई पॉडकास्ट में जाएं और उससे बात करें रादर देन कोई न्यूज़ चैनल पे. तो उसका भी बोलना सही है कि भाई जो पॉडकास्ट देख रहा है वो अच्छा से सुनेगा मेरा बात, और न्यूज़ चैनल में डिबेट होगा, मेरा बात सुनने मेरे को बोलने भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा. बट बात वही है कि पॉडकास्ट पे एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस को सुनेगा, टियर 1 का या टियर 2 का, टियर 3 का, एक जो एजुकेटेड नहीं, मतलब कि जिसको इंटरेस्ट है या जो उसको एक्सेस चीज के लिए सीरियस या जो इंटरटेनमेंट के अलावा भी कंटेंट देखता है वो लोग देखेगा.
बट न्यूज़ चैनल क्या है, अगर न्यूज़ चैनल कोई हिंदी न्यूज़ चैनल में जाके डिबेट करता है तो उस समय घर का जितना सदस्य हो, चाहे वो उसके दादाजी हो, जो फादर फिगर हो, जो बच्चा हो, जो वाइफ हो, सब कोई देखेगा, सब कोई जो बहुत कौन ऐसा जो उसको नहीं देखा होगा, कौन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे इसका बहुत कम होगा जो नहीं देखा होगा। तो वो लोग के लिए पहला इसका इंटरेक्शन बनेगा वो लोग के साथ कि हाँ ये बच्चा जो है ये अच्छा बात बोल रहा है, तो चलो इसके बारे में और सर्च करते हैं या इसको और देखते हैं ये कौन है कौन नहीं है, तो वो चीज़ हो सकता है और ज़्यादा विजिबिलिटी इसका बढ़े। तो भाई ये दोनों चीज़ का अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। क्या जैसे हमने साउथ में सन टीवी में बहुत एड्स रन किए थे क्योंकि वो एक गोल और विजन था कि हमें साउथ में पेनिट्रेट करना और थोड़े हाउसवाइफ्स के पेनिट्रेट करना। फिर तुम कर रहे हो। Do you think AI is going to help in this? For example, other day while scrolling, someone was telling me that they saw a Mr. Beast ad in Hindi. Mr. Beast content piece in Hindi. Content. Like it was clearly AI driven, and I think if he's It saves a lot of time and effort. But does it maintain quality? Like while expanding reach 100x? I mean, you can tell, for example, in ads, Tanmay would know this, you can run AI. So you shoot with an actor, say Shah Rukh Khan. Now Shah Rukh Khan's voice gets dubbed, and on digital you can run with him saying, talking to you. He'll take your name. Hi Shantanu. तुम कैसे हो? Are you serious? Yeah. आपने करा था ना, Zomato only did वो हमने लोकेशंस पे किया था, हमने स्पेसिफिक पिन कोड्स gifting में में था वो तो, स्पेसिफिक और कैडबरी में किया था। ऋतिक रोशन वाली कोई ऐड थी। करेक्ट, वो ऋतिक रोशन वाली ऐड थी। कैडबरी ने बहुत ब्रिलियंट शाहरुख खान के साथ किया था। सो इट मिनिमाइजेस द एफर्ट, आल्सो इट्स अ ग्रेट इनोवेशन। इमेजिन एन एक्टर विदाउट हैविंग टू स्पेंड एनी टाइम इज लुकिंग एट यू इन एन ऐड। ये वाला सेम चीज जो ऋतिक रोशन किया था कि जमशेदपुर में कौन सा जोमेटो किया था, हर एक क्या बोलता है, हर एक सिटी का और एक स्पेसिफिक होटल का नाम के साथ ब्लू डायमंड में खाया कि नहीं खाया वैसा। वही I चलो didn't say बोल your name. You can really customize it. The only thing is, of course, you can always tell it's AI. Like the picture you showed me. You can't tell it in the next like 6 months. Like the the mid-journey V5 moment for video is coming. Now I've been actively following the space for about 18 months, and the difference is ridiculous. In what way? Say more. Dude, the improvement is like this, especially on यही मैं बोलूँगा। देखिए अभी बता पा रहा, रिकॉग्नाइज कर पा रहा, तो इन द नेक्स्ट 6 मंथ या 1 साल 2 साल में कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा कि AI है, क्योंकि लिपसिंग कितना बेटर होगा। अभी वरुण माया कंटेंट बहुत लोगों को नहीं पता है कि भाई वो AI है, जो उसका रील्स शॉर्ट्स में डालता है, पर फोकस करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ AI है, तो हल्का फुल्का पता चलता है। तो अभी इतना बेटर है तो सोच लो और 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद तो किस बहुत लेवल पे इवॉल्व कर रहे हैं, तब अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। सच में बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत एफर्ट एफिशिएंट है। on video. I don't know if you followed Midjourney V1 to Midjourney V5. No. It's ridiculous. Someone should be able to post I saw a few. It's tough. It just become better. Until 6 months ago, AI wasn't getting fingers right. Now it gets fingers right. Now it gets broadly like if I feed in my face and my general body structure, it's able to recreate. You are able to tell. Yeah. Most want. Want you said. Most Really? want. Most want. Yeah. You can actually put the image of what I put on the clip. What's going to happen is there's going to be severe content overload. It's going to be ridiculous because cost of producing content is going to go lower, which is going to automatically create a market for the opposite, which is for the authentic, for the non-AI version of it, etc. I completely agree. Also, these AI agencies are booming like crazy, so they're going to come to you and sell their product, and you'll be intrigued to buy it. And within the next 2 years, a lot of AI products will be there for content. Now, for example, in cricket, what I've done is I've lent my voice. ये चीज हम लोग उस समय बात कर रहे थे कि भाई एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ओवर सैचुरेट हो जाएगा पूरा इंडस्ट्री खाली AI ड्रिवन कंटेंट से, और उसके बाद USP ये बन जाएगा कि जो भी चीज रेयर होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उस समय USP ये बन जाएगा कि सपोज कोई व्लॉग करने गया है, कोई जापान का कोई पर्टिकुलर वोल्केनो पे, और उसका पहला स्क्रीन पे जो टेक्स्ट आएगा वो ये रहेगा, दिस वीडियो कंटेन्स नो AI फुटेज, all the shots that you will see in this video were taken by me myself, and I traveled to Japan and I took the risk to carry my drone and my camera and I captured all the scenes myself. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा, और हो सकता है ये चीज प्रीमियम कंटेंट में जाने लगे। जैसे अभी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है उसमें क्या रहता है कि भाई तुमको इन डेप्थ और नॉलेज दे रहा है, या फिर कुछ तुमको ज़्यादा इंडस्ट्री का नॉलेज दे रहा है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में या तुम्हारा पेड वर्जन में, तो उस समय पेड वर्जन में ऑथेंटिक कंटेंट चल जाएगा कि तुमको जो नॉर्मल कंटेंट दिख रहा है वो AI वाला हो गया,
और जब तुम ऑथेंटिक कंटेंट में जब तुम सब्सक्रिप्शन में जा रहा तब तुमको एकदम ऑथेंटिक रियल टाइम तुमको कंटेंट मिल रहा है या तुमको एकदम ऑथेंटिक रियल कंटेंट मिल रहा है, तो वही चीज. I will talk in either Hindi or English. I think, Shashank, the question you asked was a great segue to part 2, which is large businesses are now realizing the importance of content. Entrepreneurs are realizing the importance of content. I think there's now a creator ecosystem that is helping people like us, for example, create content for our brands and do it a good way. But I think the other element of it, which is creators building monetization, one of which is either through building their own brands or building out their own P&Ls smartly, has not actually played out at all well yet. I think if you were to think about the Pareto for creators, do you think top 1% of creators make 90% of the creator economy? I would think the number is somewhere 1% is probably very small. Yeah. Because actually the long tail is pretty big. Economy-wise. I mean, Pareto applies to the creator world also. I think in a more extreme way. But why is content-led brands not, or creator-led brands, what has It's happened? kind of ironic. Not only influencer, but even the movie stars and this like cricketers and things like that. Even their brands per se, by and large, have not really done as well as it could have. When it has done well in the Western world, Prime Energy, all of that, like 10 examples of Yeah, billion-dollar brands 100%. led through Kevin content Hart has a creators. vegan burger chain. Yeah. But yeah, Dwayne Johnson, the Kardashians have Yeah, it's multiple incredible. ones. Everyone. Your Fenty, your Everyone, Beauty Fenty, or Selena. It's Yeah. This logic of तुम्हारे पास distribution है तो आप product launch कर दो somehow doesn't work. Is in it the India. operations that they're not cracking the right? I have a thesis, but I actually would love to first my know from you. my hypothesis is it's a hypothesis is it goes down to credibility. I feel with content creators, the credibility about business, money, and something intelligent. Sorry to say this is एंड में बात वही है, हाँ. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में रखना मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा. हाँ. एंड ऑफ द डे वही चीज कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तभी जाके वो बनेगा. और ये बात सही बोला भाई, वेस्टर्न में बहुत सारा ऐसा ब्रांड है, मतलब कि सेलिब्रिटी हो या कंटेंट क्रिएटर लेड ब्रांड हो जो कि सच में सक्सेसफुल है, हाँ. जो एज अ ब्रांड सक्सेसफुल है, उसका डिमांड है ऑफलाइन मार्केट में भी विदाउट हाँ. नोइंग कि उसका पीछे का बंदा कौन है. बट इंडिया में सच में वैसा कोई ब्रांड है नहीं जो सच में यहाँ क्रिएटर लेड हो या सेलिब्रिटी लेड हो या स्पोर्ट्स पर्सन लेड हो और सच में एज अ ब्रांड सक्सेसफुल है. very low. Interesting. People don't trust you with that credibility about they're there for the camera, they can make content, but something related to product will not work or business will not work. I think that's there. This is for content creators slowly. Credibility question. Second is to reach the first 10 CR with your personal reach is very easy. It's after this, how do you grow completely depends on the product. Yeah. Like I have tried a lot of actresses and their products, right? They have the reach. I think they made the first NCR very easily. I have left 90% of them because the product was not worth it. And why is that? I agree with you. But why do you think that is so? Because again, it's happened in the Western world that a massive celebrity launched a skincare or a travel or a apparel brand, Yeah. and it kept growing and growing, and the product was also great. वही चीज. प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाएगा हाँ. तो तुम अपने डिस्ट्रीब्यूशन की सर्टेन लिमिट चलो टच कर लेगा, हाँ. बट उसके बाद में ग्रोथ वो वर्ड ऑफ माउथ से आएगा, रिकमेंडेशन से ही आएगा, रिव्यू से ही आएगा. अगर सपोज कोई खरीद लिया कैटरीना कैफ का लिपस्टिक और उसके बाद उसको पता है अच्छा नहीं है, इससे हाँ. सस्ता ब्रांड या इससे दूसरा ब्रांड इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट देगा, हाँ. तो ऑब्वियस बात है ना भाई, कोई अपना क्यों अपना प्रेशियस मनी तुम्हारा प्रोडक्ट में लगाएगा, लगाएगा ना. वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं लगाएगा एंड ऑफ द डे. And it entered a virtuous loop and became a $1 billion brand. Has happened multiple times. Why do you think? I don't know. I'm just like spitballing here. Maybe, for example, like Yeezy went to Adidas and Nike, right? Kanye went to Adidas and Nike for Yeezy. Credible people to build a credible business. Your Fenty and Selena went to the top CXOs of the biggest brands and built it with them, and then whatever. I feel like content creators and celebrities put too much merit on their reach and not working with the right people who have already made legitimate brands. I think that's a think great that is one I think issue. Honest Company was a good example of like Jessica Alba like tying up with very good professional management from very early on. I don't know how the business went up and down, but
she actually got this right from the get-go. Exactly. Yeah. I also think, at least in the influencer space, I do not know about the cricketer in Bollywood as much, is there's a very big skill set gap. I feel like creators. इतना सच भी मत बोलो. तो ये भी जो पॉइंट है वो सही है कि भाई तुम अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे नहीं होगा, तुमको पार्टनरशिप करना पड़ेगा उस इंसान के साथ जिसके पास बिजनेस अक्यूमेंट हो, जिसको बिजनेस चलाने आता है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो कैसे बिजनेस रन करते हैं, किसका क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ का नीड पड़ेगा, ऑपरेशन कैसे हैंडल होगा, डे टू डे टास्क कैसे हैंडल होगा। तो जिसके पास बिजनेस नॉलेज हो उसके साथ पार्टनरशिप करो। और क्वालिटी पे, क्योंकि वो पर्सन को मालूम है कि भाई क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। और ही बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक तरह से बोल सकता है कि एक वेल नोन ब्रांड जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में एक्सेल किया हो, और एक तुम्हारा क्रिएटर या फिर सेलिब्रिटी वेल नोन नहीं भी है, उसको पर पता है, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, बट तुमको लगता है कि अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन उसका बिजनेस नॉलेज के साथ मिल गया तो हम लोग कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, तो करो काम। और वेल नोन ब्रांड तुम्हारा काम करने को रेडी हो गया तो और ही अच्छा, और बड़ी डबल लेवरेज हो गया। You know, like कोर्स बेचना एक चीज हुआ, वो भी टेक्निकली बिजनेस है, बट दैट इज low fixed cost and that kind of works because it's like very connected to your content. But I don't think necessarily a creator understands how operationally difficult businesses are. And I've seen so many like, you know, brands just coming out and do a launch and then यार product में दम नहीं है, operation distribute नहीं हो रहा है, or like, you know, it's not reaching you in 3 days. I absolutely So agree. Yeah. the operational skills is just so different. And I think that's where Katrina killed it with K, because again that problem of not working with the right people by doing this with Nykaa. And she is the biggest celebrity-owned skincare / makeup brand in the country because of Nykaa. Or Shilpa Shetty and Mama Earth. That deal was like iconic in its own way. At that I time, would say it was not Shilpa Shetty's brand, right? She was still endorsing. That's a still different deal. but the equity deal was very sizable and very early on, and like the way they built it out together was It's phenomenal. I would say it's halfway there. Yeah. But a celebrity saying मेरी इतनी reach है, तो मैं लक्स और डव क्यों बेच रहा हूँ? Correct. मैं खुद का साबुन लॉन्च करता हूँ. Correct. और that hasn't happened at scale. Not I just think with alcohol in none of these places. Yeah. Sorry. Celebrities are usually not the make or break for a product to be successful. It's usually like, again, I think it's like, it's actually a solve for to some degree solve for attention, right? If you notice the two biggest successes in this space, the HRX and K Beauty, right? Yeah. What is common between them? The platforms were different. Which is absolutely massive distribution platform with Myntra and Nykaa. expertise that came in, Between found the the right brand brand, and the right celebrity, the right product, and that's when it worked. Did it help that Hrithik and Katrina were part of it? Fuck yes. Yeah. So you can't deny that it can help, Yeah. right? Also, why should we expect so many successes? Also, there's actually 3 or 4 pretty decent success. I think Nishair is another really solid example of, you know, decent sized business. Have we had a 500 crore, 1000 crore outcome? No, but how many of those do they have, or do we even have in general? So, But even 50 crore, don't. ये तुम कौन से वेन डायग्राम में इतना छोटा स्लीवर है कि एक्सपेक्ट करना ही मुश्किल है. Tell me, the question is coming from कि जब the ratio of their reach to the businesses that they're building is much smaller than in the West. And why is- GDP भी तो देखो ना. अगर लोगन पॉल ने मतलब $30 का हुडी लॉन्च किया तो पहले दिन पे 2000 तो बिक ही जाते हैं. यहाँ पे वो बिकता ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं कंज्यूमर परचेसिंग पावर. दैट्स वन. कंज्यूमर परचेसिंग पावर है बट फॉर थिंग्स लाइक कोर्सेज, राइट, वो है. द अदर थिंग इज, you are absolutely right. एक simple math करते हैं, right? The path to 50 crores in bank account is very clear if you are a movie star, right? It's way more धुंधला. यही बात सही है भाई कि पूरा मार्केट का साइज और मतलब जो ऑडियंस जिसको सेल होता है उसको भी उसको नजर में रखना जरूरी है. भाई साला अमेरिका का जीडीपी किस लेवल पे है और हम लोग का जीडीपी कहाँ है, तो वो भी मैटर करता है कि डिस्पोजेबल इनकम कितना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे कितना विलिंगली स्पेंड करने को रेडी है. वैसे ऑब्वियस बात है, अब अभी कोई सेलिब्रिटी उठ के सोचेगा कि हम एक प्रीमियम ब्रांड बनाएं तो ऑब्वियस बात है हो सकता है उतना सक्सेसफुल नहीं है, और अगर मासी ब्रांड बनाएगा तो हो सकता है सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा है. अगर वो अच्छा क्वालिटी रखता है, सब चीज़ अच्छा से मेंटेन करता है, प्राइसिंग भी सही रखता है, तो हो सकता है सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाएगा through product.
Why the fuck should I? Why would my skin be in the game? मैं इतना क्यों मैं आधा नहीं चल रहा कट लो वहाँ से. Part to 50 crore in bank account is so clear to me. Why would you invest so much time? It's the craze behind passive income. हाँ? It's the craze behind passive income. अरे लाइवलीहुड देखो ना, तुम्हारा ब्रांड का वैल्यू 200-300 करोड़ होगा, तुम्हारे पास 20% इक्विटी है, लिक्विडिटी इवेंट चाहिए होता है, पैन बेचने के लिए तैयार, इन्वेस्टर नीड्स टू बाय यू आउट, इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा कि इसको मैं निकालूंगा कैपिटल से, ब्रांड की वर्थ क्या होगी. अरे कैसे बनेगा? हलवा थोड़ी है. क्यों बनेगा? जब स्पॉन्सर तुम्हें 5 करोड़ रुपए देगा साल का, तुम why would you want to hedge your reputation by doing it's obvious. Like I don't understand why we ask this as a failure of celebrities or creators. It's the market. I would challenge that, because the same was true for Kim Kardashian and Rihanna कि उनको बहुत पैसा मिल रहा था, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी. If we are saying कि Indian creators को lower ambition रखना चाहिए is a different वो कि तुम मत करो. The same can't be said, sir. Products there, like purchasing power में फर्क. No, but Prime is relatively in the US is still sold for only $2. Like, you know, in the US, like even the Gatorade is sold for $2, even Prime is $2. So hypothetically, India's A-list creator, whoever that is, A+ list creator, if they were to launch their own version of a Sting Energy, hypothetically, would it kick off or would it not? See, I'll agree with what Tanmay is saying. What happens there, Logan Paul, Prime, Beyonce, Fenty, etc. aspirational for people but affordable. People with purchasing power can actually buy it. Here, your Katrina Kaif, HRX are not aspirational for people like you and me probably, who have the purchasing power. I think so. The people with the deep pockets are not buying these brands because we have enough money to buy the other brands. And mass India, who they should be targeting, cannot afford these brands. That's, I think, a key thing. Ki the mass reach, like we discussed, most brands in India right now are selling to the top, of course, 10 to 15 ये HRX का membership नहीं है afford कर पाएंगे. उनके बीच में बड़े स्टार की reach का actually इतना value नहीं है. Correct. That's, I think, the core reason why big stars are not making and then big also brands. product working with the right No, people. it's also the right branding also, yeah. Like I think, for example, Ranveer Singh is co-founder at Bold Care. That's perfect. Where it was literally, actually it was just one Instagram video that Subtle integration बात हम लोग बात. ये एकदम सही बात है कि भाई ये लोग सेल करना चाह रहा है जो लोग रईस लोग हैं, द वेल्दी ऑफ द इंडिया, और वो लोग के पास उतना पैसा है कि वो लोग फॉरेन का ब्रांड को परचेज कर सकते हैं. तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करे क्वालिटी में और तुम्हारा कर दे. और तुमको अगर मास को रीच करना तो तुमको प्राइसिंग का फर्क पड़ेगा कि मासेस खरीद सके. one Instagram video that took the company, I don't want to disclose numbers, but it was a massive difference just because of the awareness. Yeah. Just because of awareness. I think that model is brilliant. You team up with experts who are building the bloody product, you take a decent size of it and be like, now let me do shit that grabs so much attention that your bottom line moves just because of awareness. But there's also a market. The Sorry, one more category. In categories where product innovation is not drastic, right? Branding can only take you so far if products are similar only. Condom ही है at the end of the day, कितना ही तुम करो उसके. But in like a lot of cases, for example, in the bold care space, the market is very deep and the issue is very strong. Correct. And consumers are looking for it without social discussion. Correct. So they'll straight come to the brand and buy ढूंढ रहे disruptor incumbents के लिए. हाँ? Disruptor ढूंढ रहे incumbents के लिए. वो दिख रहा है वो लोगों को. So then I think the smartness was tremendous in identification of the market and then creative manifestation. Awareness, because now you'll search for it and go. You don't need a stimuli to come see us. This is a problem. You're going to search for it. You search, like if you look at people, like look at what Revant is doing in Mosaic. That business is scaling because he knows his customer will straight come to him for a solution. Straight. Okay, इधर-उधर जाएगा ही नहीं. The funnel is like a cylinder almost. Right? What people are also doing are entrepreneurs who just want to start a business but don't know what to send. They go to Amazon, they see top 10 search keywords. Top 10 में उसी का ही business बना लेते हैं. तो वो market का proxy है. I think एक और ये, I don't know if you guys have noticed or feel this, that celebrity world, the Bollywood world, the influencer world, and the business world, the CXOs, CMOs, etc. When I see the West, the kind of
like hand in gloveness there that when a celebrity wants to start, they talk to the best guys and bring on board the best talent and start. वो India में there's a big Slowly gap. बन रहा है. हाँ, slowly बन रहा है, but there's a massive gap. Yeah. Also, I think there is a, like, I won't say it, it's fine. Why should I piss said off it. I CEOs? said it's not intelligent. Now tell me. And in general, CMOs you piss off. Don't take it. No. No, there isn't. Like, yeah, you're right. The degree of precision and professionalism with which they approach these products, that isn't there. But I don't think this is like a. It's also still very new. It's like, changing. It's very new. Like, I don't think it'll remain that way. ऐसा नहीं है कि it will change. Like, we are also like, again, ये वही है ना कि जल्दी आ गया बस. हमको दिख रहा है वहां से सब एग्जांपल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे. नहीं हो रहा है. Next 5 I साल also feel for example इसमें ना there is an opportunity to like make it a trifecta. Like there should be a face which is an A-lister or an A++ lister. There should be operating muscle which is very clear. I think there should be capital which is strategic. Like if for example a Sequoia or Elevation or any of this like high quality private equity / venture capital funds are able to bring this It's happening together, now. put capital behind Sachin it. is starting a brand. With space? Sorry? with space. In the sports goods space. And they've gotten on CEO. a very experienced operator to do it. Nice. I'm not sure if I'm Fantastic. supposed to be saying the details, but itna to hai. But कि this capital is happening from- and capital is capital coming is from from third a party. tier 1 fund. Fantastic. In fact, the tier 1 fund is who brought these two together. They knew that Sachin is looking, they knew that this guy is looking, and they did the Fantastic. marriage. I just That want is the kind of I think that is the kind of stuff that needs to happen. Ecosystem is happening. I think I personally know creators who are clocking 40 crore PAT. Okay. Yeah, I know creators. बस कर who are- पगली. No, I know creators between YouTube, live shows, courses, etc. 40 crore पैट हो रहा है. क्यों चाहिए धंधा? बढ़िया चल रहा है तुम. ऐसा सवाल मुझे पैट वालों को नहीं चाहिए. There are real examples. There are enough on YouTube. sure. You know these. I'm sure. Why is this like नहीं this? चाहिए, नहीं चाहिए. This thing of like वो धंधा ही होना चाहिए. नहीं भाई. So let's It's a come to human that sin, actually. greed. जितना मिलता है उसके बाद वो ही I करना also होता think है. there is a thing answer you, क्यों करना है? that when you're a creator, you're viewed as a creator. When you're an entrepreneur, there is a ये business. Oh, ये वही चीज है ना भाई हाँ. कि अब जब कमा रहा है, जैसे उस समय के एग्जांपल देना, हाँ. कि अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी मूवी से ही कमा रहा है उतना, हम्म. तो क्यों घुसेगा उतना स्किल इन द गेम वही, नहीं वही, लगाएगा, वही. अपना बिजनेस को बिल्ड करने उतना नहीं लगाएगा. हाँ. और वही क्रिएटर लोग अगर वो उसी से इतना कमा लेगा तो क्यों प्रोडक्ट क्यों ही लॉन्च प्रोडक्ट करेगा. लॉन्च करें. इसीलिए जो शांतनु बोला वो बेस्ट एग्जांपल है कि भाई कोई एकदम अच्छा मतलब कि वेंचर कैपिटलिस्ट हाँ. जब एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास है कोई सेलिब्रिटी या कोई कंटेंट क्रिएटर और एक अच्छा ऑपरेटर जिसके पास बिजनेस बिजनेस है, है. ये तीनों मिलकर जब कोई बिजनेस बिल्ड करेगा तो एकदम बहुत अच्छा लेवल का बिजनेस ग्रो हो सकता है. हाँ. क्योंकि सेलिब्रिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रस्टवर्दीनेस है, जो क्रेडिबिलिटी है, इसके पास ऑपरेशनल स्किल है और इसके पास फंड्स है. फंड से. हाँ. तो बस Hey, this is like a harder. नहीं है ये भी धंधा ही है. बढ़िया धंधा है. Numbers wise, that makes way more sense. But the 100%. respect wise, like even if you're the best creator, you'll never be a Shark Tank judge. You'll never be like there's a ego or whatever associated. I think there is a different way people. I think celebrities are also going that route, whether it's your cricketers or your actors, because of the positioning. हमारी Don't seem PR smart team, enough. हाँ, हमारी PR team क्या बोल रही है? तुम्हारा थोड़ा business Bro, minded. कम से कम 20 creators जानता हूँ who are in like at least 10 crore plus PAT. Okay. उतने धंधे नहीं जानता मैं. कौन सी D2C brand पे बताओ कितने हैं? हम चलते हैं भाई. पैट पे पैट की बात नहीं है. मतलब if you are able to do this, sustain it for 10 years, बन गया भाई. It's as good as a fucking beautiful exit. Like what are we talking That is about? insane. But let's come to this, like creator economics, and you speak about it a lot. But the base of the pyramid, number of people entering this world is so high, and the starting point is so difficult. Yeah. How does one think about economics of a creator business, even if ये बात तो सही है भाई. पैसा इसमें भी है, पैसा उसमें उसमें है. भी बात है, है हाँ. पोजीशनिंग का कि क्रिएटर को एज ए क्रिएटर ही देखेगा हमेशा हाँ. और बिजनेस को एज अ As a बिजनेस business ही देखेगा कि भाई देखेगा. वो बड़ा चीज है, वो ज्यादा हाँ. अच्छा चीज है. तो वही है. और क्रिएटर को हमेशा भाई कोई भी रैंडम इंसान भी उठ के बेइज्जती कर देगा, चाहे वो जितना हाँ. भी बड़ा क्रिएटर. रणवीर के साथ नहीं होता है क्या? हम्म. रणवीर इलाहाबादिया भाई वो भयंकर इंटेलिजेंट बंदा है, इतना हाँ. उसके पास मतलब नॉलेज भर भर के है और हम्म. जिस लेवल का लोग के साथ वो कनेक्टेड है ना हाँ. वो भी नेक्स्ट लेवल है. बट
रैंडम कोई भी ट्रोलर उसको ट्रोल करता ही है, वही चीज़ है। और एज अ बिजनेस पर्सन अगर कोई वो रहता क्या, एज अ बिजनेस पर्सन नहीं रहता, क्रिएटर नहीं रहता, तो उसको नेक्स्ट लेवल इज्जत मिलता, सब जगह नेक्स्ट लेवल उसको मतलब बुला के सब आप बोलता कि मेरा कॉलेज में आइए, मेरा पॉडकास्ट में आइए, मेरा इंटरव्यू में आइए। निखिल कामत का हाँ, निखिल कामत है कि भाई वो पहले फर्स्ट एंटरप्रेन्योर तो उसके बाद कंटेंट क्रिएटर, तो उसको जिस लेवल का इज्जत मिलता, उसका कमेंट्स में देखो कोई उसको ट्रोल नहीं करता, सब बोलता बताओ यार इतना सही बंदा है, पैसा के लिए नहीं, ऐसे ही ताकि हम लोग का भलाई हो, इसीलिए ये WTF बना रहा है। तो वही चीज़ है, वही डिफरेंस है।